Good morning, my dear students. I hope am I audible to everyone. Children, today we are going, as I have posted in the group, which are the two chapters which we are going to take up today. One is tourism and history, and another in political science we are going to take up social and political movements. Students, today I'll starting with social and political movements. Now, children, first like to ask you all, do you all know what are movements? But children, you know one thing, taking up movement in a democratic country is permitted. Now, if we go to see what are movements, children, in a country like India, where we follow true democracy, I hope you all know the meaning of democracy. In the country like India, where we follow true democracy, children, we have got the right to raise our voice against certain policies of the government. Now, children, see, ultimately government is also a human being like us. He has got n number of responsibilities in the whole country. So it happens at times कि government अपना कुछ rights जो एक citizen को मिलना चाहिए, government might forget or might skip out giving that right. So that is not wrong, children. We should not never ever take it negatively. It is okay, fine. He is also a human being. But children, we have got a right to raise our voice for that right. तो हाँ, आवाज उठाओ, लेकिन आवाज उठाने का भी एक तरीका होता है. There's a way of raising your voice, children. Raising your voice does not mean कि खाली झगड़ा करना होता है. आप एक प्रॉपर मैनर से, प्रॉपर मेथड से, डिसिप्लिन से अपनी डिमांड्स रेज कर. If you do this accordingly, definitely government will have a close attention to your demands. अभी children उसमें क्या हो जाता है? Now you have raised your voice for certain thing. Government will look into the matter. Government will pay more attention to your demands. And once the government feels कि हाँ public ने जो demand की है, it's valid, it needs to be fulfilled, तो government उसके ऊपर workout करना start कर देता है. But if at times government feels that this demand is not so valid, not in favor of every citizen of the country, तो फिर government उसके ऊपर सोचेगा. Government will think over it कि whether to fulfill this demand or not. Because children, whatever demand a citizen puts in front of the government should be in favor of the country as well as in favor of the citizens also. We can never be biased कि खाली हमारे फायदे के लिए we have to raise a demand. Right? So this raising a demand in a particular method is known as movements. Children, अपनी country में बहुत सारे movements हुए हैं. As I told you all कि अपनी country democratic country है, तो movements होने ही चाहिए. That is our right. But movement should have certain methods to be raised. अभी children, what is the way the movement has to lead up? सबसे पहले तो children, movement needs a better leadership. What is the first thing that we need is, children, a movement needs a better leadership. Children, you should have a best leader to raise up a movement. अभी suppose आपकी demand है. I am giving you all an example, children. Suppose there's a demand कि भाई हमारे local area में there's an open empty space. So the demand is to make a park over there. So who is going to raise up this demand? Obviously children, हम लोग तो direct हमारी country में indirect democracy है.
तो हम डायरेक्टली अपने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच नहीं करेंगे, इट इज अ लोकल एरिया मैटर, तो हम लोग लोकल रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच करेंगे। तो हु इज गोइंग टू गो टू द लोकल रिप्रेजेंटेटिव? Obviously the leader of my colony, the secretary or the chairman who is there in my colony will approach the local representative. Yes, now he has approached himself, he has gone to the local representative, but children, he needs support of the citizens in the colony. वो जाके बोलेंगे कि भाई हमको पार्क बनाना है, इट्स अ प्लेस लेफ्ट अप एम्प्टी इन माय कॉलोनी, वी हैव टू मेक अ वॉकिंग पार्क ओवर देयर। तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव विल से कि आपके पास सपोर्टर्स कितने हैं, बिकॉज चिल्ड्रन दे आर ओनली द सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन, दे डोंट ओन राइट्स टू टेक अप द लैंड, राइट? तो उनको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। इफ सपोज मेजॉरिटी ऑफ द कॉलोनी पीपल आर सपोर्टिंग हिम कि हाँ वी आर विथ हिम, वी वांट पार्क इन आवर कॉलोनी, तो चिल्ड्रन लोकल रिप्रेजेंटेटिव विल हैव टू थिंक ओवर इट। लेकिन वो भी हमारा जाने का एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए। वी शुड हैव अ वैलिड लेटर इन आवर हैंड, लेटर हैज टू बी साइंड बाय द मैक्सिमम colony people, proper secretary, chairman and other supporters, everyone has to go together. You have to talk in a very polite language, you have to approach him in a systematic and a disciplined manner. All these are the certain criteria, and you should know why do you want a park. अभी local representative will ask you कि आपको पार्क क्यों चाहिए? We can make something else over there. हम मंदिर बना सकते हैं, हम बच्चों का रिक्रिएशन सेंटर बना सकते हैं, तो हम उधर छोटा सा एक वेजिटेबल मार्केट बना सकते हैं जो कॉलोनी पीपल के लिए हेल्पफुल होगा। तो बट व्हाई डू यू ऑल वांट ओनली पार्क ओवर देयर? तो चिल्ड्रन, इसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज हम जो मोटिव से जा रहे हैं, हमारी जो बिलीफ है, वो बिलीफ को बहुत क्लियरली आपको पुट करना पड़ेगा लोकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने। तो वी शुड बी वेरी क्लियर विथ ऑल आवर आइडियाज एंड देन ओनली यू कैन अप्रोच अ लोकल और अ रिप्रेजेंटेटिव, दैट दिस इज एट अ लोकल लेवल चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट के पास जब भी डिमांड्स जाती है तो दैट ऑल्सो हैज टू बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। गॉट इट? फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन, नेवर टू एवर, अगर आपको मूवमेंट अचीव करना है ना चिल्ड्रन, तो नेवर एवर टू रेज एनी टाइप ऑफ वायलेंस इन इट, नेवर एवर टू रेज एनी टाइप ऑफ वर्बल वायलेंस, ओरल वायलेंस भी नहीं, गंदा लैंग्वेज ये सब नहीं यूज करना चाहिए। काफी लोग पता है मोर्चे वोर्चे निकालते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, सब बंद करा देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए चिल्ड्रन। ये सब करने से गवर्नमेंट इज नॉट प्लीज्ड विथ योर डिमांड, right? So your demand has to be, first, so you should have a good leader, you should have proper goal in what do you want, you should, movement should be in a disciplined manner. Secondly, methodology has to be followed children when you take up a मूवमेंट। जैसे तैसे नहीं जा सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर मेथड, एक पर्टिकुलर सीरीज फॉलो करना पड़ता है, उसमें आपके लोकल सिटीजन्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन योर सपोर्ट, इफ दे आर सपोर्टिंग योर डिमांड, देन द गवर्नमेंट विल लुक इनटू द मैटर। नाउ सो इन दिस वे चिल्ड्रन, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी को चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज्ड मैनर भी बोल सकते हो आप, you can tell it as organized manner. Your way of putting the demand should be in an organized manner. अभी चिल्ड्रन आपने ये सब कर लिया, then only the government will look into the matter, evaluate it, समझेंगे उसको। अगर गवर्नमेंट को ठीक लगा कि हाँ पब्लिक की डिमांड वैलिड है, दिस इज देयर नीड, तो गवर्नमेंट उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अभी चिल्ड्रन, इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.35 crores। अभी ऐसे तो गवर्नमेंट एक चुटकी में उसको फुलफिल नहीं कर सकती है, तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, अपनी जो रेगुलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, he can either put it somewhere in between and try to bring it up for development, या तो फिर चिल्ड्रन उनकी जब नेक्स्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनते हैं नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, जब वो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होंगे, तो उसके लिए जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनेंगे ना, उसमें उन लोग पब्लिक की डिमांड ऐड कर देंगे। Got it? I hope you all know that government makes policies and programs before coming into governance.
they have to show it कि हम 5 साल कंट्री के लिए और सिटीजन्स के लिए क्या क्या करने वाले हैं. तो दैट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के अंदर चिल्ड्रन हम लोग पब्लिक की डिमांड भी ऐड कर देते हैं एंड फिर धीरे 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 उसको अकॉर्डिंगली फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. Is everyone clear till here? I'll give you all 2 minutes just to have a look, children, that it is there on the textbook, page number 91 and 92. We are done with these 2 pages. Now I'll be proceeding to types of movements. Just look into it, children. If anyone has any query, just ask me, otherwise we'll proceed. Yes. Arya Pawar, we can do it beta later on. इसके अंदर actually children, you all have got the PDF of MCQs now. You all can refer to that also. It is also very good. Chalo, I'll give you all that later on, children. First, we will try to finish off the chapter. Now, important movements in India. First movement children India में हुआ था, that is the tribal movement. Now children, what is tribal movement? Tribal in the sense the people living in the forested areas, right? Abhi children, during the time of Britishers, this people ka rights of collecting things from the forest and selling it at a smaller scale was hampered by the Britishers. अभी चिल्ड्रन ट्राइबल पीपल के पास तो और कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता है. उनका बेसिक ऑक्यूपेशन क्या है चिल्ड्रन? जो भी फॉरेस्ट मटेरियल उनको मिलता है, दैट फॉरेस्ट मटेरियल दे कलेक्ट एंड दे सेल इट इन द लोकल मार्केट्स. थोड़ा इधर उधर बेच के दे टेक अप देयर लिविंग. But at the time of Britishers, children, Britishers have told this tribal people that you do not own any right to collect anything from the forest. Everything what is grown in the forest will be collected by us. All the forest products belongs to the Britishers. So children, how will these people survive? The surviving of these people has become very difficult. So just to fulfill their demands, children, these people have come up with the protest that is known as the tribal movement. There are people from various areas, children. Kolam from Chota Nagpur, Gond from Orissa, Koli and Bhila and Ramoshi from Maharashtra, Santhal and Munda from Bihar. This were the certain tribal groups, children, who came up with the protest. That is, who came up with the movement, saying that at least give us the right on the forest products so that we can survive our living. Clear, children, everybody with the tribal movement? Chalo. Next we have is children farmers movement in India. After tribal movement, children, we have children tribal movement में दो basic demands क्या थी? One is forest products and other they wanted to have agriculture at a small patch of land. Yes children, this is also there कि उनको उन लोग ने वो भी बोला था कि एटलीस्ट एक छोटा पैच ऑफ लैंड जो फॉरेस्टेड एरिया में है वहां पर हमको थोड़ा एग्रीकल्चर करने दो, बिकॉज दिस पीपल आल्सो हैव टू फुलफिल देमसेल्व्स ना चिल्ड्रन. इफ दे आर नॉट गोइंग टू डू एग्रीकल्चर, इफ एवरीथिंग इज गिवन टू द ब्रिटिशर्स, हाउ विल दे सर्वाइव देमसेल्व्स? इसके लिए चिल्ड्रन दे डिमांडेड फॉर टू थिंग्स इन द फॉरेस्ट ट्राइबल मूवमेंट. One is the rights of the forest products and other is owning a small patch of land for agriculture. So these are the two demands for which they started up the movement.
Now next is children farmers movement in India. Children farmers movement was also started at the time of Britishers only. अगर आपने हिस्ट्री आगे का अच्छे से पढ़ा होगा तो यू विल नो कि फार्मर्स को है ना ब्रिटिशर्स बहुत तंग करते थे सेइंग दैट व्हाटएवर यू ग्रो has to be given to us and they were not supposed to grow more of फूड क्रॉप्स. उनको कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे जैसे टी टोबैको कोको इंडिगो ये शुगर केन कॉटन ये सब ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे. बट फार्मर्स वर ऑफ द ओपिनियन क्योंकि उन लोग कि हम लोग अगर कैश क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो आप तो वो सारा कैश क्रॉप्स हमारे से खरीद के लेके जाओगे एंड खरीदना इन द सेंस एट अ minimal rate that is not even affordable to the farmers children. उतने minimal rate से उन लोग farmers से cash crops खरीद लेते थे. तो बेटा how will the farmers survive? उनका भी तो रेगुलर एक रूटीन है ना where they have to fulfill themselves. तो farmers started raising their voice कि भाई एटलीस्ट हमको फूड ग्रेन्स तो ग्रो करने दो, वो भी हमारे जितने ग्रो करने दो so that we can fulfill ourselves. But Britishers were not ready to listen to this. इसके लिए children बारडोली in चंपारण district में उन लोग ने farmers ने protest start किया था. That is a movement against Britishers कि we want to grow farm products that is food crops. जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि दिस प्रोटेस्ट वाज रेज्ड अप एट अ वेरी हाई लेवल एंड द फार्मर्स हैज टू फुलफिल देयर नीड्स एंड ऑल दिस, उन लोग ने थोड़ा बहुत फार्मर्स को रिलीफ देना स्टार्ट किया चिल्ड्रन. उन लोग ने टिल्टिंग ऑफ लैंड करके दे दिया, उन लोग ने कुछ लैंड राइट्स उनके लिए रिलीज कर दिए, कुछ टैक्सेस में उनको रिलीफ करके दिया. तो दे थॉट कि अगर ये सब करेंगे ना तो फार्मर्स थोड़े प्लीज हो जाएंगे एंड दे विल बी कन्विंस्ड एंड दे विल कंटिन्यू विद देयर growing of cash crops and giving them. But children ये सब करने से there was no much difference in the behavior of the farmers. Secondly children ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया. ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियंस ने इसके लिए स्टार्ट किया था बिकॉज इंडिया हैज टू फुलफिल देमसेल्व्स एट लीस्ट. बट चिल्ड्रन हमारी नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही थी, उतना क्राइसिस था कंट्री में. इसके लिए वी हैव टू स्टार्ट अप विद द ग्रीन रेवोल्यूशन कि एटलीस्ट वी वांट टू ग्रो फूड क्रॉप्स फूड ग्रेन्स सो दैट द सिटीजंस कैन फुलफिल देमसेल्व्स. और इसमें है ना चिल्ड्रन the whole community of farmers got divided into two groups, the rich farmers and the poor farmers. ये क्यों हुआ पता है चिल्ड्रन? क्योंकि जो रिच फार्मर्स थे ना उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, तो उन लोग ने क्या किया, वो बड़ा बड़ा लैंड का यूज करके उन लोग ने सर्टेन पोर्शन ऑफ द लैंड है ना उस पे अपने लिए अपने बेनिफिट के लिए थोड़ा फूड ग्रेन्स ग्रो करना कंटिन्यू किया और n acres of land पे चिल्ड्रन उन्होंने कैश क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया. तो इट वाज अफोर्डेबल टू देम, तो दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर रिच एंड रिच एंड रिच. बट जो पुअर फार्मर्स थे बेटा ऑलरेडी दे हैड अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड और ऑन दैट स्मॉल पैच ऑफ लैंड भी अगर उनको कैश क्रॉप्स ही ग्रो करना पड़ेगा, दे वोंट बी एबल टू ग्रो फूड क्रॉप्स. तो चिल्ड्रन हाउ विल दे सर्वाइव? इसके लिए children poor farmers started getting more poor and in this way the farmer community in India got divided into two groups. बाद में farmers ने through movements they started raising their demands. What were their demands children? कि एक आप इंडस्ट्री को जैसे ट्रीट करते हो, उनको प्रॉपर वेजेस देते हो, प्रॉपर सैलरी देते हो, उनको प्रोडक्शन प्रॉपरली होने देते हो, वैसे हमारा भी देखो, लेट अस आल्सो बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्रियल ओनर्स. हमको भी हमारे प्रॉपर अर्निंग्स करने दो, लेट अस सर्वाइव आवरसेल्फ. सेकेंडली चिल्ड्रन दे केम अप विद द आइडिया ऑफ स्वामीनाथन कमीशन कि जहां पर फार्मर्स को बहुत सारी रिलीफ मिलती है, कंसेशंस मिलते हैं. देन दे केम अप विद द आइडिया ऑफ डेप्थ रिलीफ कि हमारे जो भी कर्जे हैं, वॉट एवर डेप्थ वी ओन हैज टू बी रिलीव्ड. No, don't demand from us. हमने जो लोन लिया है प्लीज ट्राई टू फॉरगेट दैट लोन. फिर हमको कुछ लोन्स में कंसेशंस दो, फिर हमको गवर्नमेंट की साइड से कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, हमको एटलीस्ट थोड़ा मैन्यूअर दो या थोड़ा एग्रीकल्चरल गुड क्रॉप्स दो कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सके. सो इन दिस वे चिल्ड्रन फार्मर्स केम अप विद वेरियस मूवमेंट्स इन द country.
and their movements were named as Shatkari Sangathan, Bharatiya Kisan Union, All India Kisan Sabha. This were the three movements, children, which were raised by the farmers in our country. You all can underline that, children, page number 94 पे first part का second paragraph. शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन and All India Kisan Sabha. This were the three movements which were started by farmers in India. Children, here we complete with two movements. One is the tribal movement and one is the farmers movement. I hope you all have understood this. If anyone has any doubt in understanding, can ask me. Chalo, good. Now we will go to children trade unions, labor unions. Now, labor unions, children, India में क्यों start हुए थे? A very simple reason behind it. Children, why were labor unions started in India? क्योंकि लेबर्स की सर्टेन डिमांड्स फुलफिल नहीं की जाती थी. अभी चिल्ड्रन लेबर्स है, तो व्हाट कैन बी देयर डिमांड्स? टेल मी, व्हाट कैन बी देयर डिमांड्स? इंक्रीज इन सैलरी एंड नेक्स्ट इज, बोलो, holiday. Certain days should be declared as holidays. That were their demands. Abhi children, लेबर यूनियन ने टेक्सटाइल मिल ओनर्स, चिल्ड्रन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था टेक्सटाइल ओनर्स के ऊपर, उन लोग ने वीकली वंस हॉलीडे डिमांड किया था. दे स्टार्टेड डिमांडिंग इंक्रीज इन देयर सैलरी लेवल्स, दे स्टार्टेड डिमांडिंग इंक्रीज इन देयर बोनस लेवल्स. तो ये सब के लिए चिल्ड्रन दे फॉर्म्ड द लेबर यूनियंस. Other than that, children, later half, that is 1899 में railway people went on strike. What was their reason for going on a strike, children? They were demanding increase in their salary levels. So iske liye, children, they formed an organization known as All India Labour Union Congress. Children, I want everyone to underline that. Page number 94 pe dekho. This organization is known as All India Labour Union Congress. Underline that sentence, children. So this was the basic reason, children, where they started demanding things. कि या तो हमको एक दिन वीकली हॉलीडे चाहिए, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमको बोनस दो, या हमको सर्टेन डेज ऑफ द ईयर का हॉलीडेज फिक्स कर दो. दैट यू नो इंडिपेंडेंस डे इज अ हॉलीडे, दिस पर्टिकुलर festival is a holiday. So they started demanding all these things, children. Now, this was all demanded in the pre-independence period, children. Now we'll see in the post-independence period, that is in the year 1960s and 70s. Children, 1960s or 70s में labor unions थे, yes थे, and उनके demands थे, हाँ थे, लेकिन इतने सिवियर नहीं थे, चिल्ड्रन, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों के साथ थोड़ा बेटर बिहेव करती थी, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस उनको सपोर्ट करती थी. तो इतने डिमांड्स नहीं थे, चिल्ड्रन, बट यस लेबर यूनियंस थे, उन लोग कभी भी स्ट्राइक पे जाते थे. बट आफ्टर 1980s 1990s, चिल्ड्रन, जब भी इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन में पैर रखा इन द ईयर 1991, व्हेन वी एंटर्ड इनटू ग्लोबलाइजेशन, तो हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज की थी कि जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी ना, चिल्ड्रन, व्हेन द इंडियन पीपल बिकेम एम्प्लॉयज इन द फॉरेन कंपनीज, दे नेवर डिमांडेड एनीथिंग. एंड द रीजन बिहाइंड इट इज फॉरेन कंपनीज है ना, चिल्ड्रन, बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी अपने एम्प्लॉयज को.
तो there was no need for the labor group to keep up any demands. उनके demands ऐसे तैसे करके fulfill हो जाती थी. So now children, if India has to compete with the foreign countries, India will also have to provide such facilities to their employees. तो धीरे 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 इंडिया ने भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की चिल्ड्रन, एंड इंडियन कंपनीज आल्सो केम इन पैरेलल टू द फॉरेन कंपनीज जस्ट टू compete up this globalization. इसके लिए चिल्ड्रन ट्रेड यूनियंस धीरे 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 लेबर यूनियंस कम होते जा रहे हैं, बिकॉज अभी लेबर्स की जो भी डिमांड्स है वो ऐसे ही फुलफिल हो रही है चिल्ड्रन. और अभी तो गवर्नमेंट ने भी सर्टन ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि आपको लेबर को उतना मेंटेन करना ही पड़ेगा. दे शुड बी गिवन हॉलीडेज, एटलीस्ट वीकली वंस हॉलीडे, संडे तो सबको मिलना चाहिए. सेकेंडली चिल्ड्रन, उनका जो भी बेसिक हॉलीडेज है, सर्टन ईयरली हॉलीडेज है, वो उनको फेस्टिवल वाइज मिलनी चाहिए. उनका बेसिक सैलरी लेवल है वो उनको मिलना चाहिए. दिस ऑल आर द सर्टन थिंग्स व्हिच आर डिसाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड. सो नाउ देयर आर no need to have so much of movements. इसके लिए children, after globalization, movements in India has got reduced. पहले तो children, it was such कि अगर laborers are under any problem in their work area, अगर उनका कुछ इल हेल्थ हो जाता है या उनका कुछ बॉडी पार्ट में इंजरी हो जाता है, still the owners were not ready to take up the responsibility. But after globalization, after independence, children, all these areas have got changed. If you get any sort of injury in the workplace, it is the owner's responsibility to take care of you, providing you the salary for the whole time, and all these things is taken care by the business, the factory owner. So due to this all changes, children, in the work area, today laborers are not taking up movement at a larger scale. Now they are not going on a strike, children. पहले तो इतना strikes करते थे, पूरे पूरे industries बंद हो जाते थे and बहुत बहुत chaos करते थे. चलो, now here we complete with the labor union, children. Anyone has any doubt? No. चलो, my students are very smart. चलो, now we will go to women's movement. अरे children, इंडिया में रहते हो, इतना सारा हिस्ट्री पढ़ा है हमने, तो एटलीस्ट आपको वुमेन्स मूवमेंट क्या है वो तो आई होप यू ऑल शुड नो. अभी चिल्ड्रन, यहाँ पर आपकी बुक में दो टाइप के वुमेन्स मूवमेंट एक्सप्लेन किए हैं. वन इज प्री इंडिपेंडेंस एंड वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस. Now, children, women's movement में pre-independence time पे we had this Savitribai Phule, Jyotirao Phule, Rukmabai. This all were the people who supported the Indian women. Children, Indian women were exploited with lot many things. उनके साथ बहुत injustice होता था. I hope you all know कि females in our country were not supposed to get educated. लड़कियों को पढ़ाई के लिए घर के बाहर नहीं भेजा जाता था. And this was a complete injustice, children. So ये सब के लिए children we came up with the idea of movements. क्योंकि फीमेल्स को बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता था, फीमेल्स को बाहर नहीं जाने देते थे. तो चिल्ड्रन, देयर वर मेनी सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि दोंडे, केशव कार्वे, Pandita Ramabai Ranade. This all people took up the initiative. They came up with the idea कि सती बंद करो, क्योंकि children in the pre-independence period हमारे पास सती वाला भी एक format था. I hope everyone knows what is sati. Wife has to get burnt along with the husband when the husband dies. So this was a very cruel custom at that time. Next, they had the idea, the method of having child marriages. अभी children, बच्चा पढ़ेगा कि बेचारा शादी करके अपने आप को fix up कर देगा. That was really a question. No doubt they were not into that responsibilities, but yes, they have to get married at a smaller age. So that was also something not good at that time. तो वो उन लोग ने ban किया था, children. So even widow remarriages were started. अभी children, by any chance, if the female gets a widow at a younger age, what about her whole life? Because at that time, females never went to earn.
So how will they survive themselves if they don't have earning husband with them? So iske liye children widow remarriages were also started in the country just to uplift the position of women in the society. Children in the post-independence period also, I have heard and listened and read at many places that females in the Indian society were not treated well by the male personalities. Children, India is a male dominated society. तो उसमें ऐसा होता था बहुत सारे families में कि males only used to be the head of the family. Whatever male says, the female has to follow. So children, this is very, I think this is not accepted. We should work with equality because everyone is a human being ultimately, and it should be cooperative levels. Children, इसके लिए females ने ना children अपना आवाज उठाना start किया, and actually this happened when the females started going out of the house. Children, उन लोग जब घर के बाहर जाने लगे, कुछ छोटा मोटा वर्क एरिया में काम करने लगे, तो उनको समझ में आया कि there are so many things we can get in life. Why are we not raising our voice against it? तो फिर उन लोग ने देखा कि बहुत इनजस्टिस हो रहा है, लेट्स फाइट फॉर इट. फिर उन लोग ने आवाज उठाना स्टार्ट किया एंड धीरे 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 दे स्टार्टेड गेटिंग मेनी थिंग्स इन लाइफ. उन लोग ने बहुत ज्यादा भी डिमांड नहीं किया था. व्हाट वर द फीमेल्स डिमांड कि हमको पढ़ने लिखने दो, लेट अस गेट आवरसेल्फ एजुकेटेड. नेक्स्ट दे टोल्ड कि प्लीज हमको एटलीस्ट इतना रिस्पेक्ट दो कि वी कुड सर्वाइव आवरसेल्फ, ट्रीट अस एज ह्यूमन बीइंग्स. बिकॉज वो टाइम पे तो चिल्ड्रन फीमेल्स को डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था, इंसल्टिंग भी होता था, बहुत बहुत चीजें होती थी. बट नाउअडेज द सोसाइटी हैज गॉट इम्प्रूव्ड अ लॉट. नाउअडेज वी हैव लॉट ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी. चिल्ड्रन, नाउ फीमेल्स एंड मेल्स ऑल आर एट इक्वल लेवल, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत वर्कआउट किया है. चिल्ड्रन, I really tell you all, women's movement होने के बाद nowadays government is supporting the females like anything. So we have gone under equality nowadays. Clear, children? Women's movement. If children, you all have the PDF, you all have the textbook with you all, please go through that. Fatafat. If anyone has any sort of doubt, please ask me. Chalo. Now, children, we will go to the next movement, that is environmental movement. Environment movement. Now, what is environment movement, children? How to take care of our environment is nothing but environment movement. Now, children, in the environment movement, we have seen that it is not the problem at a country level. Children, ये खाली हमारे country का issue नहीं है. Environment movement is the problem at a world level. Children, it's a global issue. क्योंकि जब भी हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो चिल्ड्रन, डू यू थिंक दैट पोल्यूशन गेट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली? अभी हमने सपोज चिल्ड्रन पानी में कुछ केमिकल्स या कुछ ऑयल वाला लिक्विड्स, फ्लूइड्स कुछ भी रिलीज किया है, डू यू थिंक दैट रिमेन्स only restricted to India? No, that water is going to spread to all different water bodies, children. So it is going to indirectly, directly pollute the whole world, the water bodies around the whole world. Similarly, children, if I'm trying to pollute the air, मैं अगर air में कुछ pollutants release करती हूँ, तो that air is going to pass on to all the countries. So children, pollution is not a problem of a single country. It is the problem at a world level, children. So it is a global issue. So अगर मैं अकेली अगर pollution के लिए fight करती हूँ, children,
So that is not going to be successful completely. Because if I fight for decreasing pollution, obviously children, 100% zero pollution to not possible. But yes, we can go down at much lower levels that we can reduce pollution. So children, that can be taken care by each and every country. खाली मैं अकेली वर्कआउट करूंगी और मेरी नेबरिंग कंट्रीज मजे से पोल्यूशन क्रिएट करेगी तो पोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. So it's a common struggle, children, where all the countries of the world together has to work on it. So we can come up to certain solution कि after 10 years, after 15 years, the pollution has come under control. This is the joint efforts of all the countries together. इसके लिए children हम लोग international level पे ये problems पे work out कर रहे हैं. And children, just to reduce pollution, India has taken certain initiatives. हमने भी कुछ movements चालू किए हैं so that we can reduce pollution. Children, government nowadays does not allow any water to be, any liquid waste to be put into any sort of water bodies. आप उसको river, lake, seas, oceans में नहीं छोड़ सकते हो. You have to treat that liquid waste and then only you can remove it out. Even water, any sort of air pollution cannot be created. अगर आपको कुछ भी air में release करना है children, so first it has to be treated and then only by the purification method it can be released. So all this is done just because children, government wants to curb pollution. Next children, अभी आप देख रहे हो government is trying to introduce lot of electric vehicles. What is the reason behind introducing electric vehicles, children? Just to reduce pollution in the country. Next, government is picking up hike in the fuel area, children. इतना सारा fuels costly हो गया है. क्यों हो रहा है? So that public will switch themselves to electric vehicles. So it becomes easy. हम लोग pollution curb कर सकते हैं. So these are the certain measures which government is taking up, children, so that we can reduce pollution. अभी बीच में वो आरे कॉलोनी का फॉरेस्ट कट का children, we have started up with a movement, please do not cut forest or trees in the आरे colony areas. That was also a movement, just children, because we want to save our environment. Trees cut हो जाएंगे तो how will we people survive for a longer time? हम तो जी लेंगे children, but what about our future generations? So just to think about all those things, children, हम movements चालू करते हैं so that we get pure and clean environment in future. We in the sense, children, we human beings. मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही हूँ खाली. We are talking about all human beings in general, even the future human beings. क्योंकि children, we are not going to survive so much कि हम next trees का generation देख सके. But yes, we have to talk about our future generations also. Chalo. Environmental movement, the most easiest movement, children, and it has to be there at a global level, as I told you all. Now we are going to go to consumer movement. What is consumer movement, children? बोलो बोलो बोलो, what is consumer movement? चलो ना, आप लोग ने टीवी में एड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो. What is that? Can anyone put anything in the chat? I'm waiting for it. What is जागो ग्राहक जागो, children? Yes, you should not go for food adulteration. Yeah, consumers awareness programs, right? Now, children, Jago Grahak Jago is nothing but we as a customer has to be very alert when we are buying anything from the market. Not only in the areas of weights and measures, but also in the areas of quality of the food product or any product that you are buying. Because children, nowadays we get many products that are adulterated.
Adulterated in the sense it's been mixed with some unwanted product and it's been sold in the market, which is not good for the health of the citizens. So children, government has come up with the idea कि अगर आप कोई product with a ISI mark ले रहे हो, so that is being checked and made sure that it is a good product for the customers, right? तो चिल्ड्रन, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर पैक्ड प्रोडक्ट बाय करते हो मार्केट से, तो फर्स्ट चेक विद द ड्यू डेट एंड द मैन्युफैक्चरिंग डेट, चेक विद द आईएसआई मार्क. अगर ये सब चीजें प्रॉपर है, देन ओनली बाय द प्रोडक्ट, because the product is within the usable duration, and secondly the product is verified whether it's good or not. Adulteration values are checked over there. नेक्स्ट चिल्ड्रन, मेनी अ टाइम्स वी गो आउट, हम लोग कुछ सब्जी दूध ये वो बहुत बहुत सारी चीजें मार्केट से खरीदते हैं. यू नो मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि वो सब्जी वाला कुछ वेट्स यहाँ वहाँ का 10-15 ग्राम्स का कुछ आगे पीछे करता है. चिल्ड्रन, आर वी गोइंग टू फाइट फॉर इट? अरे तूने 10 ग्राम सब्जी कम दिया, 10 ग्राम दूध ऐसे 10 मिलीलीटर दूध कम दिया है. No, we as a citizen don't sit and fight for all these things, children. But actually, children, that is the customer's mistake. We should always fight for our rights. Because why? If we are paying completely, we should have the right to get a complete thing. तो यहाँ सब जगह पर गवर्नमेंट ट्राइज टू से कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी सॉर्ट ऑफ चीटिंग हो रहा है, ट्राई टू रेज योर वॉइस. इसके लिए देखो, एवरी पैक्ड फूड जो आप लोगे ना चिल्ड्रन, उसके पीछे ना कस्टमर केयर नंबर दिया होगा. सो इफ यू फील कि समथिंग इज रॉन्ग विद द प्रोडक्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी, या वी से ना ड्यू डेट्स और whatever you say, if you feel it's not up to the mark for the citizens, तो आप वो कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर सकते हो, which is being given by the government order कि आप अगर कस्टमर केयर पे कंप्लेन करते हो तो they have to revert back to you. Got it? So in this way, children, just to protect customers from any fraudulent activity, government has started up with this movement. जागो ग्राहक जागो, कि प्लीज आपके साथ कुछ भी गलत मत होने दो. Clear? So in this way, children, India has come up with many movements. But children, as I told you all in past explanation also, कि 1991 के बाद है ना children, India में movements का level बहुत कम हो गया है. Because when we entered into globalization, children, हमने बहुत areas में अपने आप को improve किया है, and now we have reached up to that level कि अभी अपने country में इतने issues नहीं है जिसकी वजह से हमको movement करना पड़े. So now you have heard कि अभी इतने movements नहीं हो रहे हैं, public is going very soothingly. और अभी तो आप देखो कोई भी product, if you buy everything, you get it in a airtight container, sealed pack and properly with manufacturing date, due dates, ISI mark, and everything is very well maintained, children. So we do not have any doubt of adulteration also. Clear? अभी भी चिल्ड्रन कोई भी मूवमेंट करना है तो दे शुड हैव अ प्रॉपर इश्यू और दे शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर. तो आप अभी भी मूवमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट्स इज नॉट डन नाउ, दे कैन टेक अप, बट इट हैज टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. Clear, children? We are completed with this chapter. I will give you all 5 minutes. जिसके पास जैसे भी फॉर्म में टेक्स्ट बुक है, पीडीएफ, मैनुअल, जो भी है, प्लीज फिजिकली ट्राई टू रीड द टेक्स्ट बुक फटाफट एट अ ग्लांस. अगर कुछ भी किसी को भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी. Mostly no, children, dates and years mostly they won't ask you.
Children, green block may we have, yes, one thing which we have to look into is this. Yes. Dr. Rajendra Singh Rana. Children, Dr. Rajendra Singh Rana is known as the waterman of India. He is known as the waterman because he has started up with johads in the place of Rajasthan. राजस्थान में चिल्ड्रन ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं आता था, बट दिस मैन हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट टू ब्रिंग वाटर टू दिस प्लेसेस, और उन्होंने जोहाद्स बनाए हैं. जोहाद्स आर स्मॉल वाटर एरियाज जहां पर आपको पीने के लिए, यूजिंग के लिए थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है. जैसे हम प्याओ कैसे बोलते हैं जहां पर आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मिलती है, वैसे जोहाद्स आर सॉर्ट ऑफ प्याओज ओनली चिल्ड्रन, जहां पर आपको एडिबल वाटर मिलता है विच इज यूजेबल बाय द सिटीजन्स. तो ऐसे चिल्ड्रन राजेंद्र सिंह राणा ने बहुत सारे एरियाज में उन्होंने वाटर फैसिलिटीज करके दी है. इसके लिए चिल्ड्रन दैट पर्सन इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया. He formed an organization known as तरुण भारत संघ. तरुण मतलब young people का उन्होंने organization बनाया है children, because he wanted to construct johads, and he had already brought up with 11,000 johads in hundreds of villages children. इवन जहां पर फॉरेस्टेड एरियाज है, जहां पर बिल्कुल डिजर्टेड एरियाज है, वहां पर भी उन्होंने पानी लाने की कोशिश की है. एंड चिल्ड्रन ही हैज स्टार्टेड अप विद इरिगेशन फैसिलिटीज आल्सो, कि जहां पर वी हैव एग्रीकल्चरल लैंड बट वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज भी स्टार्ट की थी. therefore he is known and he has won the Stockholm Water Prize also children, जिसको हम इंडिया में नोबेल प्राइज बोलते हैं. Stockholm Water Prize, that is known as Nobel Prize in India, just because he's brought water in our country. So children, I hope you all are clear with this chapter. If anyone has any issue, please let me know. Otherwise, we'll switch to history now. We are done with political science. We have to switch to history now, children. So do you all have any doubt? We will go to history now. History mein today we are going to do an interesting chapter, children, tourism and history. Children, that is the 8th chapter of history, page number 52. Adulteration matlab or just adding some bad quality food with the good quality food. If suppose now children, I give you an example कि दूध है, तो जो प्योर मिल्क आया है उसके अंदर आप पानी मिक्स करते हो, तो दैट इज नोन एज एडल्ट्रेशन, because you are spoiling the quality of the milk just for the increasing in the product. 1 लीटर दूध में आप आधा लीटर पानी डालोगे, तो obviously you will be able to sell 1.5 liter milk. Got it? So this is known as adulteration. Sure. Now we are going to go to tourism and history. Now children, we all like to go on a tour, right?
Yes, Shambhavi, very good. When chili powder is mixed with a brick powder, it is known as adulteration. Now, children, we all like to go on a tour. अच्छा लगता है ना? अभी तो anyways, I think out of what participants have got, 50 to 60% of the participants would have gone for a short monsoon tour. क्योंकि बारिश में तो सभी जाते हैं. Everyone wants to refresh themselves. And anyways, due to this lockdown, na hamara pura vacation, we did not go anywhere, right, children? So nowadays we all think कि चलो थोड़ा तो ऐसे घूम के आते हैं, so it becomes refreshing for everybody in the family. And children, yes, all this is absolutely very, very necessary for recreation. Abhi children, tourism is not something that we have learned from today or yesterday. Tourism is taught to us from the ancient times, children. Ancient times में भी लोग घूमने जाते थे. Medieval time में भी लोग घूमने जाते थे. अभी लोग pilgrimage places पे जाते हैं. राजा जब अपना लैंड छोड़ के दूसरे जगह पर घूमता है. Travelers, children. आपने सुना होगा बहुत. अभी ये फर्डिनेंड मैगलन है, क्रिस्टोफर कोलंबस है. उन लोग ने सबने क्या किया है चिल्ड्रन? दे हैव वेंट ऑन टूर फॉर द होल वर्ल्ड. तो वो टाइम से चिल्ड्रन टूरिज्म इज बीइंग कैरिड ऑन इन द वर्ल्ड. And children, tourism cannot be for one or two or for three reasons. Tourism can take place for n number of reasons. Got it? So tourism is actually very necessary just for the development of the citizen. Abhi children, suppose if a person is staying in the remotest area of the country, एकदम ही गांव है, तो उनके बच्चे, उनके generations कहाँ पढ़ेंगे? Tell me, where will they go to study? Obviously, they have to migrate themselves to some better areas for receiving better education. So what will happen? They will tour themselves. ना घूमेंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे, कार में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे. They'll come to some urban areas for better education. So tourism can be for educational purpose, for pilgrimage purpose, for your business purpose, for your job purpose. It can be for n number of areas, children, where we take up tourism. और ये टूरिज्म होना ही चाहिए चिल्ड्रन. इट इज वेरी वेरी नेसेसरी. अभी यहाँ पर आपको चिल्ड्रन 4 टूरिस्ट ये ट्रैवलर्स के नाम दिए हैं who has toured to many places in the world. अभी जैसे बेंजामिन है. बेंजामिन was from Tudela, children. He was the first European traveler. He has traveled to places like France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, Persia, India and China. You can imagine children, वो टाइम पे भी उन लोग इतना घूमते थे. Do we go to all these different places? Have anyone of you all have visited to all these places, children? No. हम लोग ने हार्डली कोई 2-3 कंट्रीज का टूर किया होगा, तो या इट्स ओके. बट हम कभी इतने सारे प्लेसेस पे टूरिंग पे नहीं गए हैं चिल्ड्रन, विच वॉज पॉसिबल इन द 12th century. गॉट इट? सो तभी भी लोग इतना टूरिज्म करते थे चिल्ड्रन और बहुत नॉलेज गेन करते थे. Next we have is Marco Polo, children. Marco Polo was an Italian traveler of the 13th century. Children, उन्होंने एशिया एक्सप्लोर किया है. Almost the whole of Asia is explored by him, but China was the major target in his travel. He has been in China for 17 years. और उन्होंने वहां पे बहुत कुछ स्टडी किया, बहुत कुछ नॉलेज गेन किया, and everything is written down in his travelogue. Next we have is Ibn Battuta. Ibn Battuta was a traveler, children. He was of the Islamic world. He believed in Islam religion. So obviously he was from the Islamic world, children. He has toured all over to the world for 30 years. But children, his idea was such कि भाई मैं घूम के ना पूरा सर्कुलर फॉर्म में घूमूंगा, लेकिन एक कंट्री में वापस रिपीट नहीं करूंगा. I will take a round to all the countries, but I'll not repeat the places. This was the main idea of Ibn Battuta, and he has been on voyage for 30 years, children. So you can imagine, key travelers at that time also used to travel for such a long period of time.
हम लोग 30 days भी घूमने नहीं जा सकते हैं children. We have such a tied up schedule. We are tied up with so many things कि अगर मैं आपको बोलूँ 30 दिन घूम कर आओ, children, it is practically not possible for us. Next we have is Gerardus Marcarator. Children, Gerardus Marcarator was a cartographer. He has designed world map, he has designed India map. बहुत सारे ग्लोब बनाया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने की है चिल्ड्रन. और उनके ये मैप डिजाइनिंग से ना चिल्ड्रन बहुत सारे ट्रैवलर्स को नेविगेशन कन्वीनियंट हो गया है. क्योंकि अगर आपके हाथ में एक मैप है तो ट्रैकिंग ट्रेसिंग प्लेस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू चिल्ड्रन. अभी हम लोग कहीं पर भी अननोन प्लेस पे जाते हैं, वी डोंट हैव टू सर्च द प्लेस, वी पुट द प्लेस इन गूगल मैप्स एंड वी फाइंड द लोकेशन. सो चिल्ड्रन, इट हैज बिकम वेरी गुड फॉर अस जस्ट बिकॉज ऑफ हिम हु हैज कम अप विद द आइडिया ऑफ मैप्स. So in this way, children, we have a small description of 4 travelers over here who have come up with their huge travels. Now, the famous travel agent, can you all name it out, children? The famous travel agent for the whole world. Thomas Cook. Children, Thomas Cook is a travel agent from years together. Actually, children, उन्होंने एक foreign tour design की थी from one small place to another. That is from Leicester to Lockburg. Children, वहाँ पर he had carried 600 people with him, and it was a round trip, going and coming back to the original destination. And he had got a great success in that tour. So that became a level of encouragement for him कि वाओ, मेरा एक टूर सक्सेसफुल हो गया ना, तो नाउ आई कैन स्टार्ट अप विथ मोर टूरिज्म. तो ऐसे करके चिल्ड्रन उन्होंने बहुत टूरिज्म में इन्वेस्टिगेट किया एंड ही स्टार्टेड विथ अ होल कंपनी ऑफ टूरिज्म. चिल्ड्रन, उसके बाद तो ही स्टार्टेड बुकिंग टिकट्स आल्सो, ट्रेन टिकट्स, flight tickets, everything was booked by him. He started a travel agency, purely a travel agency. And children, really, Thomas Cook ka agar if you take a tour, it's really very good. Nowadays, he is not, matlab that agency is not more in working, but Thomas Cook ने बहुत tourism का जो idea है कि you can become a tour agent, you can plan the whole tour for the citizens. This is being brought up in the world by Thomas Cook. Now, children, इसका है ना, I have prepared the whole short notes. I'll be sending it to you all after the class. ठीक है, लास्ट टाइम ऑल्सो मैंने भेजा था चिल्ड्रन आप लोग को स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का. दिस टाइम टूरिज्म एंड हिस्ट्री का भी I'll be sending you all the short notes of the whole chapter. So if you all read that notes also, now the whole chapter will become thorough to you. Clear? Now children, at the local level, we have one traveler known as Vishnu Bhatt Godse. Children, Vishnu Bhatt Godse has traveled from Maharashtra to Ayodhya and back to Maharashtra at the times of independence. Children, जब भी इंडिया ने फर्स्ट क्राई ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था 1857, the first war for independence, तभी चिल्ड्रन ही वॉज ऑन हिज ट्रैवल. और वो टाइम पे व्हेन ही वेंट टू अयोध्या, ऑन हिज वे ही हैज सीन रानी लक्ष्मीबाई and her fight for independence. So children, that was such a stunning history, stunning event for him कि उन्होंने जो अपनी एक बुक लिखी है माझा प्रवास करके, he has written down a book known as माझा प्रवास. Children, उनकी वो बुक में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का in detail mention किया है what all she has done for the independence of our country. Got it, children? तो उनकी वो पूरी बुक है ना चिल्ड्रन, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंसेस लिखे हैं that he has come across on his travel from Maharashtra to Ayodhya and back to Maharashtra. Got it? So Vishnu Bhatt Godse has also written a book known as Mazha Pravas. Children, everything I have written it in the notes. I'll be sending it to you all, so don't panic. ठीक है, चलो. Now we are going to go to the main part of the chapter, that is types
of tourism. But before I start with the types of tourism, children, I want you all to have a look to what is tourism for different tourists, travelers, and the Indian traveler. Fatafat. Page number 52 and 53. Fast. Chalo. I hope everyone is clear till here. We are going to start with now types of tourism. Children, we have different types of tourism as I have told you all at the start of the chapter. Ki public travel from one place to another for n number of reasons, children. सबके अपने अपने खुद के एक reason होते हैं travel करने के. Now here we have the first tourism, that is the local and interstate tourism. Now, local and interstate tourism in the sense, children, moving around in your own place. आप विद इन मुंबई में कहीं घूमते हो या विद इन महाराष्ट्र में आप कहीं घूमते हो या विद इन इंडिया में आप कहीं घूमते हो तो दैट इज नोन एज लोकल या इंटरस्टेट टूरिज्म एंड चिल्ड्रन दैट इज वेरी इजी. अभी चलो आज मुझे कुछ काम नहीं है, आई फील कि मुझे कहीं घूमने जाना है, आई ओन माई ओन व्हीकल या कुछ नहीं तो ओला बुक कर दो, उबेर बुक कर दो एंड यू कैन गो आउट फॉर अ टूरिज्म. सो चिल्ड्रन लोकल टूरिज्म इज वेरी सूदिंग एंड सेकेंडली वहां पर आपको कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है. चिल्ड्रन यू हैव अ कन्वीनियंट लैंग्वेज टू टॉक. हिंदी में बोलो सबको समझेगा. Got it? So children, local tourism is very soothing, not at all stress gaining because every facility is up to your convenience. Got it? So local tourism or interstate tourism is the best tourism forever. Next we have as children, international tourism. Children, international tourism can be for different reasons. We go for recreation. हम 2-4 दिन कहीं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बहुत सारी जगह पर ऐसे घूम के दुबई जाते हैं, मालदीव जाते हैं, तो बहुत सारे एरियाज में हम खाली बस घूमने जाते हैं and then we come back. It's for recreation. Yes, children, Thomas Cook is no more working now. मैंने आपको बोला ना, this agency is being shut down recently. चलो, now children, even international tourism nowadays has become very easy, children, क्योंकि अभी foreign tourism एकदम open हो गया है public के लिए. After globalization, children, foreign tourism has got open for all the citizens. और secondly, children, जब से उन लोग ने trans European railway network वगैरह develop किया है, तब से tourism has got very easy. Secondly, children, अभी तो इतने सारे cruises वगैरह लग गए हैं water areas में भी कि traveling through water has also got easier and enjoyable. पहले अपने को लगता था अरे इतना टाइम पानी में क्या करेंगे, it's so risky, this that, but nowadays children, you have seen that we have got cruises which have n number of activities in it, so people do prefer to go by cruise and all these things. So train, flights, cruises, all this have come up so conveniently, children, कि हमारे लिए इंटरनेशनल टूरिज्म भी डिफिकल्ट नहीं रहा. बट यस चिल्ड्रन, इंटरनेशनल टूरिज्म आप सडनली प्लान नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है. चलो आज मुझे मन हुआ मुझे दुबई जाना है तो आई कैन नॉट स्टैंड अप एंड गो टू दुबई. जैसे फाइस से कि आज मुझे मन हो गया कि चलो मैं एक केरला टूर करके आती हूँ तो आई कैन टेक अप माई ओन व्हीकल एंड रन ऑफ टू केरला. बट ऐसे मैं इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं कर सकती हूँ. इट हैज टू बी प्रायरली प्लान्ड ड्यू टू लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस. Got it? This is the only problem which we have with international tourism. And children, international tourism लोग meetings के लिए जाते हैं, job purpose के लिए जाते हैं, trade businesses के लिए जाते हैं, बहुत सारे reasons होते हैं. कोई health purpose के लिए, अभी है कि कोई बहुत severely ill है, जिनका treatment suppose अपनी खुद की country में इतना best नहीं है, तो they might go to foreign countries for treatment. तो ऐसे बहुत सारे reasons है children for which we go for international tourism. Next we have is historical tourism.
Now, children, the people who have too much of interest in the historical background, we यहाँ पर आपको एक गोपाल नीलकंठ दांडेकर का example दिया है, children. He was the person who's to arrange for the tourism in Maharashtra only to the places where Shivaji Maharaj has got the importance. उनके forts, उनका पैलेसेस या उनका कोई घर वगैरह है, तो वहां पर वो है ना सारे ट्रैकिंग एक्टिविटीज, एडवेंचरस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते थे. एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एडवेंचर्स यूज्ड टू एनरोल इन हिज एजेंसी. तो अभी शिवाजी महाराज के जो सब फोर्ट्स है चिल्ड्रन, वो तो बड़े ही एडवेंचरस फोर्ट्स है, तो वो सब एरियाज में हिज टू प्लान अ टूर फॉर द पीपल. तो दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल टूरिज्म, जहां पर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप घूमने जाते हो जस्ट टू हैव अ लुक एट दैट प्लेसेस. सिंहगढ़ फोर्ट है, रायगढ़ फोर्ट है, चिल्ड्रन पुणे वगैरह एरियाज में तो यू हैव गॉट मेनी फोर्ट्स वेयर यू कैन हैव अ विजिट. So this is known as historical tourism, children, where you understand the history of the country. नेक्स्ट चिल्ड्रन हमारे पास है ना अहिल्या बाई होलकर करके एक फीमेल थी चिल्ड्रन, हु वाज अ वेरी वेरी गुड सोशल वर्कर. चिल्ड्रन व्हाट शी यूज्ड टू डू, जो पीपल ऑफ आवर कंट्री यूज्ड टू गो ऑन 4 धाम यात्रास, आपने सुना होगा, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग्स और वो सब है, वो एरियाज में जो टूरिज्म पे जाते हैं, तो चिल्ड्रन इट्स ऑल माउंटेनियस एरियाज, तो आपको रास्ते में वहां पर कोई भी ईटिंग या वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती है. तो अहिल्या बाई होलकर जो है ना चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. अपने खुद के फंडिंग से वो लोगों को पानी पिलाती थी, खाना खिलाती थी, बहुत सारा पिलग्रिम्स को ऑन द रूट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी on her own personal fundings, children. So this is also one sort of social work which was done by Ahilya Bai Holkar. Next, we have is geographic tourism. Now, children, geographic tourism is, if I give you all a simple example, now suppose I am a nature lover, I love nature, तो मैं ऐसी प्लेस पे टूरिज्म पे जाऊंगी जहां पर सिर्फ फॉरेस्ट होगा या बहुत सारा पीसफुल एरिया होगा. तो चिल्ड्रन दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल टूरिज्म. लो, choosing a place which has some geographical importance. अभी कोई लोग होते हैं जिनको घाट एरियाज बहुत पसंद होते हैं, माउंटेनियस एरियाज पसंद होते हैं, तो उन लोग माउंटेनियस एरियाज से टूरिज्म के लिए जाते हैं. कोई लोग होते हैं जिनको बीचेस वगैरह का नेचर बहुत पसंद है, द नेचुरल बीच एंड एवरीथिंग, तो दे विल सिलेक्ट अ प्लेस ऑन द सी साइड एरियाज, कोस्टल एरियाज. तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स विच यू सिलेक्ट फॉर योर ओन रिक्रिएशन, फॉर अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, दैट इज नोन एज geographical tourism. Getting it, children? And we go to all these places just to satisfy our own curiosity. अभी कभी मेरे को लगता है कि अभी रेनी सीजन है तो आई शुड गो टू दी घाट एरियाज जहाँ पे वाटरफॉल्स होगा, नेचुरल ब्यूटी होगी. So all this is known as geographical tourism. चलो, next we have is, after international, children, we did historical tourism, then we did geographical tourism. Next we have is health tourism. Now, children, what is health tourism? For maintaining my own personal health. जैसे मैंने आपको बोला कि if I am not feeling well, if the atmosphere of my area is not suitable for me due to my some ill health problems, तो I might migrate myself to some other areas जहाँ पे मुझे maybe natural environment मुझे support करे या जहाँ पे मुझे proper medical facilities मिलती हो. तो if I migrate myself to that areas, then that tourism is known as health tourism. अभी चिल्ड्रन बहुत सारे फॉरेनर्स आपको पता है हेल्थ टूरिज्म के लिए इंडिया आते हैं, बिकॉज इंडियन एनवायरनमेंट इज सो सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी एलिमेंट्स. सेकेंडली चिल्ड्रन, अपनी कंट्री में मेडिकल एरियाज भी बहुत अच्छे हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, ये सब चीजें अपनी कंट्री में चिल्ड्रन इतनी बेस्ट है कि पीपल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज कम टू इंडिया फॉर देयर पर्सनल हेल्थ ट्रीटमेंट्स. So the tourism which they take up for migrating to India for their health purpose is known as health tourism.
Got it, children? Now we'll go to agro tourism. What is agro tourism, children? Tourism that is done for the purpose of agriculture. अभी चिल्ड्रन इंडियन गवर्नमेंट है ना फार्मर्स को एडवांस्ड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर सिखाने के लिए उनके लिए दिल्ली में गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, लाइब्रेरी स्टार्ट की है कि इवन द एजुकेटेड फार्मर्स कैन एक्सेस ऑल दिस थिंग्स एंड हैव अ बेटर लर्निंग ओवर इट. तो चिल्ड्रन गवर्नमेंट जो गांव से फार्मर्स को लेकर दिल्ली तक लेकर जाते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज एग्रो टूरिज्म. इवन चिल्ड्रन इजराइल में है ना बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिलेटेड नए टेक्नोलॉजीज डेवलप होते हैं जहां पर उन लोग एग्रीकल्चरल मशीन्स और इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं. तो देयर आर मेनी फार्मर्स जो इजराइल वगैरह जाते हैं just for the development of agricultural background. So this tourism is also known as agro tourism. That is at an international level. और जो national level में गांव से दिल्ली तक जो travel करते हैं, so that is known as national tourism. But it is purely for agricultural purpose. Therefore, it is known as agro tourism. Clear, children? Everybody, what is agro tourism? Chalo. After agro tourism, children, we have sports tourism. अभी children तुम्हारे इतने सारे players, FIFA, Olympics, World Cup, Asiads, Commonwealth, ये सब games के लिए children, obviously we have one common center, right? अभी वो common center पे games held होती है, but players have to travel themselves. Abhi suppose Indian player is going to England for match, London for match, so obviously Indian players has to travel from India to UK, India to London. So children, this travel is known as sports tourism क्योंकि आप sports के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हो. Children, it is not only at international levels, even the people playing at national levels also go to many different places in India for their matches. I've heard many students saying, children, आज मेरा चंडीगढ़ में match है, या in December I'm going to go to Madras for my match, I'm going to go to Chennai. तो children, ये सब जो हम within the country travel करते हैं just for sports purpose is known as sports tourism. It can be at national level also, it can be at international level also. Got it? Chalo. Next we have is tourism based on special events. Next tourism we have over here is tourism based on special events. अभी children, very simple. आपके friend की शादी है, आपके कोई job की conference meeting है, या कोई बुक का सेमिनार है, या कोई लिटरेचर प्रोग्राम है, कुछ भी इवेंट के लिए चिल्ड्रन आप वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रैवल करते हो, तो दैट इज नोन एज tourism based on special event. Now suppose your friend has arranged his marriage towards Lonavala side, या towards the resort area somewhere out of Mumbai. So children, you travel from Mumbai to that particular area. Friend की शादी तो हम मिस नहीं करेंगे, right? So that travel is known as tourism based on special event. वैसे ही अगर आपके job purpose के लिए कुछ conference meeting है, तो आपको उधर जाना पड़ेगा. अगर कोई international book exhibition है, या कोई literature program है, कोई musical concerts है, तो अगर हमको ये सब attend करना है children, तो हमको जो destination पे वो program है वहां तक जाना पड़ेगा. So going to that place is traveling from your place to the destination. So that is known as tourism based on special events. I hope all my students are clear with types of tourism. Children, 2 minutes ka reading time. Fatafat, chalo.
Tell me any doubt in types of tourism. Chalo, clear children? Shall we proceed? Now, we will go to development of tourism. Children, do you think development of tourism is necessary? Should we give importance to the area of tourism? Is it beneficial to us, the country? Yes, children, tourism is very, very necessary, not only to the citizens, for the citizens, but also for the country. Yes, na? We need tourism, children, to refresh, to expand our job business, to go for job conferences. बहुत बहुत सारी चीजों के लिए हमारे लिए important है. But at the same time, children, वो country के लिए भी उतना important है, because it helps to boost the economy of our country. आप travel पे जाते हो, children, आप ट्रैवलिंग चार्जेस पे करते हो, आप आपका हॉस्पिटैलिटी चार्जेस पे करते हो, आप वहां से कुछ शॉपिंग करते हो, तो कितनी सारे जगह पर आप अपना पैसा यूज करते हो, राइट? सो दिस इज गोइंग टू एड ऑन इकोनॉमी टू आवर कंट्री. इसके लिए चिल्ड्रन टूरिज्म इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. So children, we should obviously take up tourism in a very proper way. But at the time of tourism, children, there are certain things which needs to be taken care. सबसे पहले safe transport. Obvious है children, आप by train, by car, by bus, by जो भी vehicle you travel, you have to see to it that your travel is a very safe journey. Next is children, wherever the tourist go, the tourist has to be provided with proper facilities. Abhi on the way proper washroom facilities honi chahiye. The road has to be very proper if the tourist is traveling by a road. Yeah, if the tourist is coming by any flight, मतलब flight से वो airport उतरता है, तो airport से लेकर destination तक, obviously everything is not near the airport. The tourist has to travel to different places within the country. तो airport से लेकर destinations तक उनको सारी facilities on the way मिलनी चाहिए. अगर आपके साथ कोई handicap tourist है, तो handicap tourist के लिए special assistance होना चाहिए children wherever you go at a destination. तो ये सब चीजें भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है children, because all this is going to add to the economy of your country. Got it? Other than that, children, these are all certain things which we expect from the country. कि अगर suppose मैं foreign country जा रही हूँ tour के लिए, तो when I get down at the airport, I should have my own car coming to pick me up. On the way from the airport till my hotel, अगर रास्ते में कोई hotel restaurant होनी चाहिए, कोई washroom facilities होनी चाहिए, the road has to be very soothing and very ongoing road होना चाहिए. अगर मेरे साथ कोई handicap tourist है, तो they should get a wheelchair for my tourist. They should pick up my handicap tourist and get to the destination by putting him in the wheelchair. ये सब चीजें अगर मैं expect करती हूँ children from the country, तो definitely there are certain things which a country expects from me also. अगर मैं कहीं पर भी घूमने जाती हूँ children, it is my duty also to take care of that tourist place. अगर मैं उधर जाके सब गंदा गंदा कर दूंगी children by throwing that over here, by throwing all the wrappers to what I eat, by scratching on the walls of the monuments, by scratching on the tree branches and writing my name over there, do you think all this is very good what I am doing?
Obviously not, children. I have to look into it. Okay, if I am expecting something better from the country, I should also in return give something better to the country. I should not vandalize the monument. I should not vandalize any tourist place. I should not make any tourist place filthy. गंदा नहीं करना चाहिए चिल्ड्रेन. जो भी प्लेसेस पे आप विजिट करते हो, ट्राई टू मेंटेन क्लीनलीनेस ओवर देयर. और बेटा कोई आपका नाम लिखने से या आप कुछ स्क्रैच करने से यू आर नॉट गोइंग टू बिकम इमॉर्टल ओवर देयर. So better do not vandalize any of the tourist places, whether it's a historical monument or whether it's a sightseeing place or whatever it is. Do not vandalize. Vandalize matlab kharab karna. Do not vandalize any of the tourist destinations. Clear? Now, next is children, whenever you go on a tour. Abhi to chalo children hamare paas Google Maps hai. So it becomes very convenient for us to travel. But 5 years back, 10 years back, children, जब हमारे पास Google Maps नहीं थे, we used to get a guidebook. And that is to be very important for the tourist. Guidebooks है, pamphlets है, maps, मतलब वो draw किया हुआ map है, वो हमारे लिए बहुत convenient होता था children. क्योंकि हम कोई भी country में या कोई भी state में जहाँ पर घूमने जाते हैं, तो सबसे पहले children language used to be a barrier for us. I tell you now, if we go to Kerala, Karnataka, to South Indian places, children, वहां पर लोगों को हिंदी है ना इतना कंफर्टेबली नहीं समझता है, एंड अपने जैसे बोलने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है. तो हाउ विल वी बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज? सो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए चिल्ड्रन, जो ट्रैवलर, टूरिस्ट और वहां के लोकलाइट्स को समझनी चाहिए. So maybe you can take up English, maybe you can take up Hindi. कोई भी एक ऐसी common language होनी चाहिए. So learning of a language is also very necessary, children. And it is said that कि at least drivers है, guides है, जो आपको various destinations दिखाने लेके जाते हैं, they should learn one common language so that tourism can become easy. क्योंकि चिल्ड्रन जब भी हम घूमने जाएंगे तो obviously we are dependent on the drivers, we are dependent on the guides to take up to various destinations. So this people should be trained in such a way कि एक common language ना उनको आनी चाहिए जो every tourist समझ सके. This will really help you boost your tourism of that state. चलो, I hope you all are clear till here. फटाफट have a look, children. Page 55 तक we are completed. I want everyone to have a look till page 55. Then we can go to page 56. Sure. Next we have is children conservation and preservation of historical heritage or the heritage of our country. How are you going to conserve it? चिल्ड्रन आप जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाओ, कोई भी मतलब साइट सीइंग प्लेसेस पे जाओ, नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज देखो, एवरीथिंग हैज टू बी कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड. अभी क्या आप जंगल में जाओगे तो झाड़ काट दोगे? नहीं काट सकते हो. आप अगर कोई भी मॉन्यूमेंट देखने जाओगे, एलिफेंटा केव्स है या अपना नॉर्मल CSMTM स्टेशन है चिल्ड्रन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वो भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है. तो चिल्ड्रन आप उधर जाके क्या उसको गंदा करोगे? नहीं. तो चिल्ड्रन दे आर सेइंग कि हाउ आर यू गोइंग टू कंजर्व एंड प्रिजर्व ऑल दिस प्लेसेस? तो बहुत सिंपल है, गंदगी मत करो, बिल्कुल भी गंदगी मत करो. जाओ, देखो, enjoy everything over there and come back. कोई भी कचरा मत फेंको, कोई पे भी स्पिटिंग मत करो, यूज वॉशरूम्स ओनली प्रॉपरली. पानी पीना है, ये है, वो है, यू हैव गॉट रेस्टोरेंट्स ऑन द वे, यू हैव गॉट शॉप्स ऑन द वे, जो चाहिए वो खरीदो, डस्टबिन में डाल दो. डोंट नॉट वेंडलाइज एनी ऑफ द मॉन्यूमेंट. किधर भी आपका नाम वाम लिखना नहीं है, किधर भी आपको गंदगी नहीं करनी है. So this is the way, children, how you can preserve and conserve the historical monument or your cultural heritage. Got it? So this is the best way, children, how you can keep your country ka every place of visit very clean. Next, children, अपनी country में है ना heritage site करके एक एक्ट
एक्टिविटी जैसा है, नॉट एक्टिविटी ऑल्सो एग्जैक्टली वी कैन कॉल, बट हाँ अपनी कंट्री में ऐसा है कि लोगों को अगर घूमने जाना है तो हाउ कैन वी टेक अप अ लुक. अभी सपोज आई गिव यू हेरिटेज साइट है ना चिल्ड्रन, अहमदाबाद में सबसे पहले बहुत फेमस हुआ था. It is like, you know what, early morning they start up a heritage walk na in the Sunday mornings usually. सुबह 6 बजे they start up with a heritage walk. If I'll give you all an example in Mumbai children, because you all might have visited certain places in Mumbai. अभी suppose heritage walk in Mumbai starts from Gateway of India. So they have a group of 5 or 10 people with them. वो 10 लोग जब आ जाएंगे उधर, दे आर गिवन द टाइम एट 6:30. दे हैव टू गैदर ओवर देयर. वहां से लेकर चिल्ड्रन जो भी मोस्ट फेमस प्लेसेस है नियर बाय एरियाज में, दे हैव टू टेक अ वॉक टू ऑल दैट फेमस प्लेसेस. जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, फिर वो एशियाटिक लाइब्रेरी है, मरीन ड्राइव है, फिर वहां पर एक गांधी म्यूजियम है, फिर ये अपना CSMTM station hai. So these are the certain 5-7 locations which they will pick up, and they have to take a walk to all these different locations, and the target given to them is of 2 hours, 3 hours. Within that particular period of time, the guide will be there with them. They will take up for a heritage walk, sub distance different places pe. They will have a look and they will come be left up at a shortest place. अभी जैसे स्टेशन से नियर बाय लास्ट दे विल टेक CSMTM स्टेशन, फिर पब्लिक को वहां पे रिलीज कर देंगे सो दैट दे कैन गो बैक टू देयर प्लेसेस. तो ऐसे चिल्ड्रन उन लोग पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करते हैं जहां पर बहुत सारा देखने जैसा स्पॉट्स है. तो वैसे उन लोग पब्लिक को हेरिटेज वॉक पे लेके जाते हैं. तो ये इसमें क्या होता है चिल्ड्रन, अगर अपने जैसे लोकल मुंबईस ने भी, अगर मुंबईकर्स ने भी बहुत सारे मुंबई प्लेसेस नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, उनके लिए एक वॉक हो जाएगा एंड दे विल आल्सो गेट मच नॉलेज अबाउट इट. सो इन दिस वे चिल्ड्रन हेरिटेज वॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री. And this is not only in Mumbai or Ahmedabad children. Now this trend of heritage walks has got started up in most all parts of India. Clear? Now children, we have 2 topics that are left. One is the professional opportunity and next is development of tourism in Maharashtra. I will take this up in the next class. बहुत छोटा सा है, hardly I'll take 5 minutes to finish this off, and then we will start up with another chapter of history and politics. ठीक है? I hope everyone is clear till what I have explained you all. Even on top of that, children, if you all have any doubts, feel free to WhatsApp me, children. I'll reply you at my convenience. Okay, you all have got my number. You all can contact me on WhatsApp. I'll be definitely clearing your doubts. Chalo. Bye. Study well. Children, please study. Okay.